morning students. Today we have to start our next topic of thermodynamics, that is the applications. In today's lecture we have to discuss the applications in detail. Clear? So many chemical reactions involve the generation of gases capable of doing mechanical work or generation of heat. In different types of chemical reactions, ठीक है, जो अपने को गैसेस रिलीज होंदियां ने, ठीक है, दोज गैसेस कैन बी कैपेबल, ठीक है, गैसेस कैन बी अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल वर्क, ਜਾਂ फिर हीट एनर्जी रिलीज होएगी, ठीक है, विद द रिलीज ऑफ द गैस ਜਾਂ ਤਾਂ सिस्टम 'ਚ मैकेनिकल वर्क डन ਹੁੰਦਾ है ਜਾਂ फिर की है हीट रिलीज ਹੁੰਦੇ ਆ. एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस टू क्वांटिफाई दीज चेंजिस एंड रिलेट them to the changes in the internal energy. जो चेंजेस सिस्टम 'ਚ आते हैं बिकॉज ऑफ मैकेनिकल वर्क ਜਾਂ फिर हीट रिलीज के कारण, ठीक है, जो चेंजेस होंगे सिस्टम के विच उन्होंने असी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के अकॉर्डिंग की है डिफाइन करते हैं. क्लीयर? उन्होंने चेंजेस के बेसिस से असी सिस्टम की टोटल एनर्जी जिन्हों असी इंटरनल एनर्जी बोलते हैं उन्होंने डिफाइन करना है. क्लीयर? एंड फर्स्ट वी विल सी वर्क व्हेन मैकेनिकल वर्क इज डन. Clear? That is the pressure volume work. For understanding the pressure volume work, let us consider a cylinder. ठीक है, आप एक सिलेंडर ले रहे हैं जिंदे विच की लेना है. Let us consider a cylinder which contains 1 mole of an ideal gas fitted with a frictionless piston. And total volume of the gas is VI. This is the total volume of the gas. And pressure of the gas inside is P. If external pressure is Px, which is greater than P, piston is moved inward till the pressure inside becomes equal to P external. Clear? If we are considering that value of P external, ठीक है, ज़्यादा है जो अपने को इनसाइड गैस के लिए असी प्रैशर यूज़ कर रहे हैं उसके नालों आउटसाइड तो जो पिस्टन के उपर असी प्रैशर अप्लाई करना जी वो ज़्यादा है. ठीक है, वी हैव टू अप्लाई दिस प्रैशर टिल द टाइम वी विल गोइंग टू गेट सेम वैल्यूज़ ऑफ प्रैशर. ठीक है, दैट पी एक्सटर्नल एंड पी इंटरनल इक्वल नहीं होंगे जिन्नी देर उन्नी देर असी पी एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं. ठीक है, वी हैव टू मूव द पिस्टन इनवर्ड मीनस असी आउटसाइड वाला प्रैशर इनसाइड की है ट्रांसफ़र करवा रहे हैं. ठीक है, अप्लाई करना है इक्वल अमाउंट ऑफ प्रैशर. सो यू कैन सी द फिगर वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस इन अ सिलेंडर व्हेन इट इज़ कंप्रेस्ड बाय अ कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर P external in a single step is equal to the shaded area, this one. Clear? And here you can see that V initial is compressed to V final, this one. ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग एक्सेस ऑफ प्रेशर जो फाइनल वॉल्यूम साढ़े को आ रहा है दैट इज़ V फाइनल. क्लीयर? सो लेट दिस चेंज बी अचीवड इन अ सिंगल स्टैप मीनस एक स्टैप के विच ही असी की है एक्सटर्नल प्रैशर अप्लाई करना है पिस्टन मूव करके एंड द फाइनल वॉल्यूम बी VF. ड्यूरिंग दिस कंप्रैशन सपोज पिस्टन मूव्स अ लॉन्ग डिस्टेंस L एंड इज क्रॉस सैक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन इज A. क्लीयर? फॉर दिस पिस्टन डिस्टेंस कवर्ड कितना है L डिस्टेंस कवर किया है पिस्टन ने. ठीक है, इनीशियल पोजीशन दे विच स्टार्टिंग असी पिस्टन को बिल्कुल ऊपर रखा हुआ जो ही असी प्रैशर अप्लाई किया पिस्टन इनवर्ड मूव कर रही है. डिस्टेंस जो पिस्टन कवर कर रही है दैट इज़ दी L. Clear? And area of cross section of the piston is the A. Clear? A is the area. And then volume change, how we can calculate? Distance into area, that is del V. VF minus VI. We also know pressure equals to force upon area. Pressure ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ डिफाइन करते हैं? Force applied per unit area. Therefore force on the piston equals to P external into area. If work is done on the system then work कितना कैलकुलेट कर सकते हैं आप? Force multiplied with the distance equal to P external into area into length distance. Clear?
जस्ट आप फोर्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं इस एक्सप्रैशन फोर्स के लिए आप पी एक्सटर्नल डॉट ए वैल्यू पुट की है डिस्टेंस ऑलरेडी वी नो दैट एल दैन पी एक्सटर्नल चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल एंड चेंज इन वॉल्यूम डेल वी नूं आपां वी एफ माइनस वी आई दे नाल रिप्लेस कर सकते हैं क्लीयर नेगेटिव साइन ऑफ दिस एक्सप्रैशन is required to obtain conventional sign for work which will be positive. If we need work done positive then we have to use the negative sign. Why? Because volume we know in case of compression it will going to decrease going to have a negative value. As a result with the negative sign convention we will going to get positive value for the work. It indicates that in case of compression work is done on the system and here V final minus V initial will be negative because second time volume will going to be compressed or reduced and negative multiplied by negative will be positive. Hence the sign obtained for the work will be positive. If the pressure is not constant at every stage of compression but changes in number of finite steps work done on the gas will be summed over all the steps and will be equals to summation P into change in volume. Clear? Summation of product of pressure and change in volume. Clear? Like that you can see जिद्दां ही आपां pressure increase कर रहे हैं with every at each stage with rise in pressure volume की हो रहा है साडे कोले compress. ठीक है, you can see sorry at maximum pressure at maximum pressure the value of volume is almost less totally compressed. जिन्ना ही ज़्यादा प्रैशर इंक्रीज करांगे उन्ना ही ज़्यादा की है साडे कोले वॉल्यूम दे विच असीं कंप्रैशन देखते हैं. ठीक है, स्टैप बाय स्टैप हो रहा है ये वाला जो अपने कोले कंप्रैशन है गैस दी. यू कैन सी विद दिस ग्राफ इट शोज PV plot when pressure is not constant and changes in finite steps during compression from initial volume VI to final volume VF. Work done on the gas is represented by the shaded area. Clear? And same if pressure is not constant but changes during the process ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ pressure change करवा रहे हैं constant नहीं ले रहे then it is always infinitesimally greater than the pressure of the gas. Then at each stage of compression the volume decreases by an infinitesimal amount dV. Clear? With every degree rise in pressure volume ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ decrease ਕਰੇਗਾ and ਜੋ fraction of volume decrease ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ small fraction ਨੂੰ dV ਦੇ ਨਾਲ denote ਕਰਦੇ ਹਾਂ. In such a case we can calculate the work done on the gas by the relation this one. Work done equals to negative V initial minus V initial to V final P external d V. Here P external at each stage is equals to P internal plus d V. P external total pressure जो external ये आप apply कर रहे हैं किंदे इक्वल होएगा जो total pressure inside cylinder दे विच already present है. ठीक है, plus जो असी excess of pressure apply किया plus dP. Clear? In case of compression in an expansion process under similar conditions the external pressure is always less than the pressure of the system. Clear? In case of expansion कदों होएगी गैस दी डेफिनेटली जो असी आउटसाइड तो प्रैशर है जिहड़ा कंटेनर के उपर घट अप्लाई कर रहे हैं लैस अमाउंट ऑफ प्रैशर अप्लाई होएगा कंटेनर दे विच. ठीक है, इफ आउटसाइड तो प्रैशर है जिहड़ा वो लैस होएगा इवन दैन असी एक्सपेंशन देखते हैं ना वॉल्यूम के केस दे विच दैन वॉल्यूम कैन एक्सपैंड वेरी ईजीली. सो दैट्स वाई वी कैन से दैट इन केस ऑफ एक्सपेंशन external pressure is less than the internal pressure. So Px is equals to Pex is equals to P internal In minus dP change in pressure. In general case we can write P external Pex equals to P internal plus or minus dP that is change in pressure. Such processes are called reversible processes. In those processes जिंदे विच असी expansion and compression side by side notice करते हैं these are the reversible processes. A process or change is said to be reversible
if a change is brought out in such a way that the process could at any moment be reversed by an infinitesimal change. A reversible process proceeds infinitely slowly by a series of equilibrium states such that system and surroundings are always in near equilibrium with each other. Clear? For example, this is the example of the reversible process with in each step with rise in pressure you can see that volume will going to compress. ठीक है? So a reversible process proceeds slowly by a series of equilibrium states. Equilibrium states means those states on which we can say that concentration of reactants and products is becoming equal with each other, and the processes other than reversible processes are known as irreversible processes. Clear? In chemistry, we face problems that can be solved if we relate work term to internal pressure of the system. ठीक है? Means जिन्ना work असी system ते कर रहे हैं और उसी system दे विच internal pressure कितना present है उदे according की है define करना है. We can relate work to internal pressure of the system under reversible conditions by writing the equation that P external dV Pex is equals to Pn plus minus change in pressure. Since dP into dV is very small, we can write work reversible equals to V initial, V final, P internal, change in volume. Clear? And now, as we know, pressure of the gas according to ideal gas equation PV equals to nRT. We can substitute for P here nRT upon V. ठीक है? After doing the substitution, now we have to take the integration for 1 by V, that is 1 by V dV integration. It is log V. Now put the limits V initial to V final. Clear? After solving the integration you have to just put the limits V initial to V final, and value of natural log to base log is 2.303 into log. ठीक है? We have changed this log to 2.303 log. Free expansion of a gas in vacuum the case की होंदा external pressure बिल्कुल zero होएगा. ठीक है? Then we can say it is called the free expansion. ठीक है? Expansion of gas in a vacuum means where external pressure is not applied is called free expansion. No work is done during the free expansion. Why? Because we are saying external pressure on the system is zero. So whether the process is reversible or irreversible. Now we can write equation. Which equation? First law of thermodynamics, change in internal energy equals to heat and work done. ठीक है? We can write this equation into different possible ways. How? Let's see that. Let us substitute W equals to minus P external change in volume. ठीक है? This is in case of the expansion, that is the free expansion. Clear? And if a process is carried out at constant volume del V equal to 0, then change in internal energy is equals to QV. Clear? दोनों steps clear ने. In general ਅਸੀਂ बोलते हैं कि change in internal energy ਸਾਡੇ ਕੋਲ equal ਹੁੰਦਾ है heat plus work done, and
in case of compression, or sorry, in case of free expansion, work done is equals to negative of P EX into change in वॉल्यूम. वाई नेगेटिव साइन? क्योंकि सिस्टम ने खुद वर्क ਕੀਤਾ है, ठीक है. एक्सपेंशन मीनस हीट रिलीज हो रही है सिस्टम चो, डेफिनेटली ਅਸੀਂ वर्क डन माइनस साइन ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ डिनोट करना है, ठीक है. सो पुट द वैल्यू ऑफ W, दैट इज दिस वन. एंड आफ्टर दैट वी आर सेइंग दैट वॉल्यूम वी आर टेकिंग कॉन्स्टेंट. जो वॉल्यूम ਅਸੀਂ कॉन्स्टेंट कर रहे हैं, डेफिनेटली del V इज इक्वल्स टू 0. नो चेंज इन वॉल्यूम with increase or decrease in pressure. So internal energy is equals to the heat present in the system at constant volume. So the subscript V in QV denotes the heat is supplied at constant volume. Clear? And next, isothermal and free expansion of an ideal gas. For isothermal, T is a constant and expansion of an ideal gas into vacuum means work is equals to 0, since P external is equal to 0. Clear? For isothermal, temperature constant, expansion of ideal gas into vacuum, work equal to 0, P external also equals to 0. Joule determines experimentally that Q is 0 and therefore internal energy is also 0. According to the first law of thermodynamics, internal energy equals to heat released plus work done can be expressed for isothermal irreversible and reversible changes. For isothermal irreversible change means after expansion we can't consider its compression back. Clear? So Q is equals to minus W, means change in internal energy will be equals to 0 in case of isothermal expansion. So del U equal to 0. As a result, Q is equals to minus W. Minus W. Work done is also represented with the negative sign. So as a result we get positive Px V final minus V initial. For isothermal reversible change, Q is equals to negative work nRT log Vf upon Vi. Clear? For adiabatic change, Q equals to 0, then internal energy will be equals to work done during the adiabatic processes. Clear? So this is the first case, that is the application of work in the thermodynamics. Clear? And next we will see the topic of intensive and extensive properties. Thermodynamics, a distinction is made between extensive and intensive properties. An extensive property is a property whose value depends on the quantity or size of matter present in the system. For example, mass, volume, internal energy. ठीक है? These are the extensive properties, means which can vary with the mass. Those are extensive properties. Clear? For example, I have taken a container with 100 milliliter of the water. After some time, what I can do, I will do this water half into different containers. इनदे नाल की होएगा, साडे कोले मास ते वॉल्यूम चेंज होएगा. ठीक है? मास एंड वॉल्यूम चेंज होएगा, डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी भी चेंज होएगी फॉर डिफरेंट मास एंड वॉल्यूम. इंथैल्पी चेंज भी वेरी करेगी, हीट कैपेसिटी भी वेरी करनी है. ठीक है? ऑल दीज आर नॉन एज दी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. ठीक है? And second, those properties which do not depend on the quantity or size of matter present are known as the intensive properties. For example, for same container, ठीक है, temperature, when I am taking it in a full 100 milliliter quantity, even then temperature will be of room temperature. ठीक है? And pressure also will going to be remain same. But in case of extensive properties, volume, mass will going to change, but
temperature will going to remain same. Temperature, pressure, density, these are the examples of the intensive properties, ठीक है, जो change नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ mass ਦੇ change ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ. For example, temperature, density, pressure are the intensive properties. Clear? Molar property is the value of an extensive properties I of the system for 1 mole of the substance. If n is the amount of matter, फिक्सड क्वांटिटी गिवन है अपने को मैटर की, ठीक है, फिक्सड क्वांटिटी है, ऑलरेडी फिक्स होएगी, डेफिनेटली फिर उसनों असीं इंटेंसिव च ही कंसीडर करते हैं, ठीक है. अदर एग्जाम्पल्स ऑफ आर मोलर वॉल्यूम Vm एंड मोलर हीट कैपेसिटी Cm. लेट अस अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बाय कंसीडरिंग अ गैस इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V at temperature T. Let us make a partition such that volume is halved. Each part in each part as you can see here, ठीक है. Initially this container gas at volume V and temperature T, ठीक है. After some time partition each part having half of the volume of the gas, ठीक है. Volume असी reduce कर रहे हैं, then temperature will फिर भी की आ रहा है, same आ रहा है. So इनदे तो we can get idea that volume on even a reduction of volume temperature will going to remain same. So we can say that volume is extensive property जो mass दे नाल vary कर रही है, and temperature की है intensive property which will not going to vary with the volume, ठीक है. So you can see that now figure B has 1/2 of the original volume V by 2, but the temperature will still remain the same, that is T. It is clear that volume is an extensive property, therefore is an intensive property is a temperature. Clear?